Okay. So what's the tissue? Next tissue we're talking about also connective tissue. Yes, sir. What is the origin of the connective tissues? Basically, reading it down. Origin याद है ना? What are the three germinal layers? मेसो एंड एक्टो क्या आगे क्या? एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म तो कनेक्टिव टिश्यूज का कौन सा origin है बताया ना आपने? एक्टोडर्म Only 1 minute of reading will I require, and answer will be less or less. You don't read it over at all, huh? Right? You don't answer a basic question. Sit down, please. Huh? So, the origin of connective tissues is what? Mesoderm. Okay, also. Now, let us see what is the speciality of this connective tissue. As the name is suggesting, that is a which tissue? Connective tissue. Can I say it will help to very good. Bind and support tissues and organs. Clear, everybody? So, connective tissues, it helps in binding and support the tissues and organs. Right, kids? Yes. So, you know, your outermost layer is skin, and beneath the skin there is a muscle. There is a tissue called muscle. So the skin needs to be attached to the muscle, right? Yes. Who will attach it? Right. Okay. The bones in your body are example of connective tissues. Okay. So can I say they help to support your heart, lungs, etc. Yes. So that is why they help in what? Binding and support. Okay. Now let us find out, as we discuss the connective tissues, some clear differences between a connective tissue and epithelial tissue. So as I am teaching, you will tell me immediately, okay, sir, yes, this is a difference between whom? Connective tissue and epithelial tissue. Many a times, it is made up of different type of cells. Reaction नहीं दे रहे आप लोग. What is the reaction I'm expecting? You're not pinching your bum, otherwise. Don't give that reaction. What is the reaction I expect? Yes. What yes? What yes? No. What is the reaction I want? Yes, sir. Not no. yes No. So this is the difference, na? Epithelial tissue is made up of one type of cells, right? Yes. But a connective tissue is made up of. Yes. आपको बोलना चाहिए था, सर ये क्या है? Difference. Then, in between the connective tissue cells, there is a lot of intercellular space. पीछे वाले क्या म्यूट का बटन दबा के बैठे हैं? हाँ? Is this a difference? Yes. And it shows a presence of a lot of intercellular substance, which is called as the matrix. Yes. Yes, क्या? Try one more. Difference. Yes, difference both. Yeah. So is it made up of one cell or many different type of cells? Which show presence of a lot of intercellular space. And this intercellular space is filled with a cementing substance, which is called as matrix. Okay? And who will produce the matrix? The matrix will be produced by the cells themselves. Cells खुद बनाएंगे. किसको बनाएंगे cells? Matrix को. Okay? And this matrix is made up of polysaccharides.
Who knows the meaning of the word polysaccharide? Yes, complex sugars. Right. Complex sugars are called polysaccharides. Along with, it shows the presence of fibers. क्या लिखा मैंने? As the fibers are present in all types or most types? मतलब will all connective tissue have fibers? No. So there will be some exception, na? Yes. Which will not show the presence of fibers. So that is the question that can come for me. कि किसमें fibers नहीं होते? लेकिन उसके पहले मुझे बताने दो कि what do you mean by fibers? Any idea? कि word fibers से आपके mind में क्या thought आ? Yes, अथर्व. When I am mentioning fibers, what is the thought that is coming in your mind? Thread. Very good. मैं भी वही बोलने वाला था कि fibers मतलब these are thread-like structures. Okay. And any guess कि threads किससे बनते होंगे? Proteins. Very good. So fibers are thread-like, made up of what, बच्चा? Proteins. This is general understanding. It need not be 100% biological words, but to make you understand. Next time अगर कोई teacher बोलता है fibers, तो general दिमाग में क्या बात आना चाहिए? एक thread जैसा है, जो किससे बना है बच्चों? Protein से बना है. ठीक? And in the connective tissue, the fibers are of different types. Okay, such as some fibers are wavy and they are present in bundles. They are present in bundles. So it will be one fibers or a gucha of fibers? And they appear white in color. They are called white fibers. And they are made up of a protein called collagen. What is the protein called? Collagen. Understood? So, what are the specialities of these white fibers? They are in bundles. They are wavy fibers, and they are collagen fibers, and they are called as white fibers. Did the class follow everybody? Yes. Okay. Has anybody heard of collagen before this? Anybody? Yes, Atharva? What have you heard of collagen? TV ads something. हाँ बोल ना टीवी में क्या सुना था वो भी तो है कोलेजन वही कोलेजन है ना कोई मार्स पे से नहीं कोई कोलेजन आया होगा तो अगर हम लोगों ने टीवी के ऐड में सुना है कोई यूट्यूब में सुना है तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं उसको पता ये क्या सुना है अरे तो ऐसा तो हम सब ने सुना है तो कुछ ऐसा बता पा रहा था जैसे राज ने कैसा कुछ सुना था लेकिन उससे कितना मस्त डिस्कशन किया ना उसको मैं चॉकलेट देने वाला हूँ राज बोलो क्या सुना किसी और ने सुना कोलेजन हाँ नहीं कोई नहीं सुना है बच्चों क्या सुना है बिल्कुल लोगों ने कल का मैच पोस्टपोन का सुना नहीं सुना था नहीं सुना तो बच्चा these collagen they give rigidity what do they give rigidity समझता toughness and remember collagen is the most abundant protein in the animal world. It is the most abundant protein in the animal world. Animals में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली प्रोटीन कौन सी बच्चों? Collagen. Collagen. Did you get my point, everybody? Yes. So अगर किसी टिश्यू में कोलेजन वाले फाइबर्स होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट फाइबर्स, तो वो वाला टिश्यू इलास्टिक होगा कि रिजिड होगा? रिजिड। जितने ज्यादा कोलेजन होगा उतना उसका टफनेस उसका रिजिडिटी क्या होगा बढ़ेगा ओके सो ये कोलेजन के बारे में ध्यान में रखेंगे हम बात इट इज मोस्ट व्हाट बच्चों abundant which protein animal protein okay and collagen has got a lot of industrial applications also in industry. They boil collagen with water and they form gelatin.
And gelatin can be used as a binder in chocolate, pastries, and ice creams. I hope you got my point. The other type of fibers that can be seen in some, or rather in most of these connective tissues, is fibers which are present single. जैसे ये कैसे था bundles में था, ये fibers कैसे होते हैं single, और ये कैसे wavy थे, ये कैसे straight है. These are made up of a protein called elastin. These fibers are called yellow fibers. Got it, kids? So yellow fibers, they are present singly. एक ऐसे. Are they wavy or are they straight? Straight. Are they unbranched or branched? Branch. Branch. And they are made of a protein which is called as Elastin. collagen, elastin. And as a result of which, if a tissue has a lot of yellow fibers, will it be rigid or will it be more flexible? More flexible, showing flexibility. Okay? That's what is going on there between both of you. Huh? Doing something down below, keep your hand on the top of the desk. Huh? What's there? Huh? Don't fidget around. Don't fidget around. Pay attention. Okay? You have to give your top attention, you have to keep your mind with me. Okay? Your 96, 97% in 10 is, how much is this? Zero in front of me. Till the time you go into KEM, AIMS or JJ School of Medicine. You got 96 in your 10th and you are landing up doing homeopathy and veterinary science. So that was your old achievement. I hope you got my point. So don't come with that airs in the classroom. Everybody throughout the 3 hours of biology and 3 hours of physics or whatever time of chemistry, you have to give your top attention. You are not good enough right now to go into a medical college. हिंदी सांगूंगा, अभी तक तुम लोग उस मकाम पे पहुंचे नहीं हैं कि तुम मेडिकल कॉलेज में जाएगा. तो तुम्हारे दिमाग में अगर ये हवा है कि हमको फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है, हमको मैथ्स आता है, तो निकाल दो इसको अपने दिमाग से. अलग सर्वना नाउ. सो येलो फाइबर्स के बारे में क्या क्या बताया, याद आया सबको कि वो कैसे स्ट्रेट है, ब्रांच है, और क्या देते हैं बच्चा, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. बराबर है ना. तीसरा टाइप का भी फाइबर्स हमको दिखाई देता है, दैट दीस फाइबर्स they are highly branched. How are they? Highly branched. मतलब इतने ब्रांच होते हैं कि if you look at them under the microscope, they will look like a spider's web. Spider's web, that is मकड़ी का जाला. Okay? So how do they appear like बच्चों? A spider's web. They are called reticular fibers. क्या कहते हैं उसको बच्चा? Reticular fibers. Reticular fibers. You got it, bachalo? So what are the 3 types of fibers that are found? Reticular fibers, Yellow fibers. White fibers. white fibers. And this is a speciality of all the connective tissues or most of the connective tissues? Most of the connective tissues. Most of the connective tissues. Okay? And listen to this line that I am saying. I think so. If I read it, you yourself will understand. It is giving introduction of connective tissues as connective tissues are most abundant and widely distributed in the body of complex organism. Most abundant and widely distributed. आता समजला? Most abundant म्हणजे क्वांटिटी मध्ये ह्यूमन बॉडी मध्ये सर्वात जास्त कोण आहे? Connective tissues. And widely distributed मतलब it is present throughout your body. ऐसा नहीं कि ज्यादा और एक ही जगह पे, ये ज्यादा भी है और हर जगह पे. जैसे स्कूल में आपने प्लांट टिश्यूज भी पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम. तो प्लांट्स में मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इज पैरेन्काइमा. In animals, the most widely distributed tissue is what? Connective tissue. I hope you got it, everybody. Yes. The connective tissues, depending upon the nature of the matrix,
क्या क्राइटेरिया यूज किया मैंने? नेचर ऑफ द matrix can be classified as loose, dense, and specialized. Three types: loose, dense, and specialized. So when you look into the loose connective tissue का matrix, कहाँ देख रहे हैं आपने को? Matrix में. In the loose connective tissue, within the matrix, you will find that there are many connective tissue के cells, but the numbers of fibers are very less. So such an arrangement makes it a loose connective tissue. Whereas in a dense connective tissue, if you look at it under the microscope, you'll see that the number of cells are comparatively less, but they show the presence of a lot of what बच्चों fibers. मसाला जास्त घट्ट समजतं ना? जास्त घट्ट अरेंजमेंट कोणाची असणार? कारण त्याच्यामध्ये फायबर्स जास्त आहेत आणि सेल्स कंपॅरेटिव्हली कमी आहेत. इकडे सेल्स जास्त आहेत आणि फायबर्स कमी आहेत. बस अरेंजमेंट कशी झाली? लूज झाली. इकडे अरेंजमेंट कशी झाली? घट्ट. So loose and dense, depending upon the matrix. More cells, less fibers, loose. More fibers, less cells, dense. Got it? Now, then we have a third type. What is that called also? Specialized. And the specialized connective tissue include the tissue called as cartilage. Then we have bones. And the third one is blood. Okay? So कितने हैं बच्चों? 3. कौन से? Cartilage, bones, blood. Cartilage, bones of the blood. Okay? And the speciality of the blood is, remember this speciality. Fibers are absent. Okay? So I've written over there that fibers are present in most types. In which type fibers are absent? In the blood. Got it? Because the speciality of the blood is कि जैसे बाकी कनेक्टिव टिश्यूज के पास मैट्रिक्स होता है, ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो पानी होता है, वाटरी होता है, और उस it is called as plasma. क्या कहते हैं इसको? Plasma. So what is the matrix of the blood called? Plasma. Plasma. और फिर उस प्लाज्मा के अंदर सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, वैसे. Okay? So if somebody is asking you who is a liquid connective tissue, what is your answer, बच्चों? Blood. Which tissue is without any fibers among the connective tissue? Blood. Blood. What are the three types of fibers? Collagen वाले white fibers, elastin वाले yellow fibers, and reticular fibers. Okay, kids? Then, madam over there? Yeah. What is the difference between a loose connective tissue and a dense connective tissue? The number of the cell is more in loose connective tissue, whereas the fibers are less, and comparatively in dense connective tissue the number of cell is less and the fibers are more. Fibers are more. Huh? And the loose ones will have areolar connective tissue. There is one more which is called as adipose. And the third one, not discussed in your NCERT, is reticular connective tissue. So actually loose में कितने होते हैं? 3. हम लोग क्या बोलेंगे? It is consisting of 2. What are they? Areolar and adipose. So there is a type which is called as areolar. ठीक है बच्चों? Now, how does it get the name areolar? It comes from the word areola. क्या word है उसका? Areola. So areolar connective tissue comes from the root word areola. So what do you mean by this areola? See,
Do you see these fibers? Yes. And between the fibers, do you see these pockets? Spaces are there. Do you see these fibers? Do you see spaces between the fibers? Yes. These spaces are called as areola. That is why the connective tissue is called as areolar connective tissue. As what make you बोलते हैं areolar? Because it shows the presence of spaces between the fibers, which are called as areola. That is why it is called as areolar connective tissue. Now, this areolar connective tissue will show the presence of your wavy fibers, which are present in bundles, followed by yellow fibers, followed by fibers which are called as the reticular fibers. Okay, ये तो है ही. Okay. इसके अलावा it will show the presence of around 8 to 9 different type of cells. Okay, and you will mention and remember these 3 types. Okay, you see these 3 types of cells I mentioned there. The first type, here see, it's called as a macrophage. This one is an adipocyte, and this is a mast cell. Okay, पहले 3 नाम याद रखेंगे सब लोग. कौन से? Adipocyte, macrophage and a mast cell. पहला वाला कौन सा है? Adipocyte. फिर मैंने क्या लिखा? और mast cell. These macrophages are also called histiocytes. Okay? देखते क्या है. पहले ये वर्ड याद रखिए. क्या है वो? Macrophage. Okay? What is this phage? Macrophage. Have you heard this word? Phage? नहीं. They are responsible for, मतलब उनका फंक्शन जो है उसको हम कहते हैं phagocytosis. क्या कहते हैं उसको? Phagocytosis का इंग्लिश मतलब होता है to eat a solid. अगर उसका मैं भाषांतर करूं, ये लैटिन वर्ड का अगर मैं भाषांतर करूं, तो मैंने उसे eat a solid, उसको क्या बोलते हैं? Phagocytosis. अगर एक दूसरा वर्ड आता है pinocytosis, तो उसका मतलब होता है drink a liquid. Okay? When a cell will eat a solid, it is called phagocytosis. When a cell will drink a liquid, it is called as pinocytosis. Did you get my point? So see that बच्चों. एरियल कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर ये आ गया एक बैक्टीरिया. कौन है ये? बैक्टीरिया सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है? सॉलिड होता है. कैसे बैक्टीरिया? हैप्पी की साइड है? हैप्पी है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करने वाला है, लेकिन उसको पता नहीं. देखो ये वाला सेल कौन है? मैक्रोफेज. वो जाके उस बैक्टीरिया को देखो क्या कर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है. धीरे धीरे घेर रहा है, धीरे धीरे. उसको लग रहा है मेरे को हग कर रहा है. देखो क्या कर रहा है, उसको एनगल्फ कर रहा है. क्या किया उसको? एनगल्फ. अलग ही लगता है कि नहीं? झोपला का कौन है यहाँ? अरे इसी को नहीं बोलते के लिए बाबा. हाँ, गुड इज दैट. अथर्व की हर बात अथर्व में डालते हैं. ऐसी बात अथर्व में क्या? हाँ. सो क्या क्या चारों तरफ से इसको घेर लिया, मतलब एनगल्फ कर लिया. Okay, now what it does is, look at this. उसका सेल मेम्ब्रेन जो है ये ना फ्यूज हो गया, और देखो बैक्टीरिया अंदर क्या हो गया? ट्रैप. अब वो बैक्टीरिया सैड, उसको मरने वाला है.
फिर आपको मालूम है आपके सेल के अंदर पावरफुल लाइसोसोम्स होते हैं, जिसको आपको स्कूल में सुसाइड वैक्स बताया था। वो लाइसोसोम्स आके इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। कौन फ्यूज होता है बच्चों? लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स पूरा खतरनाक डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज करते हैं, और पूरा बैक्टीरिया क्या होता है बच्चों लोग? समझा? तो ये सेल ने क्या किया? सबसे पहले एक सॉलिड को एनगल्फ किया, फिर उसको निगल लिया, एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर डाल दिया, फिर उसको क्या किया? ब्रेक डाउन किया, और ये पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया उन्होंने? फैगोसाइटोसिस। पूरा प्रोसेस समझना है? सबसे पहले क्या करो उसको? एनगल्फ। एनगल्फ करने के बाद क्या करो उसको? अंदर ट्रैप, फिर डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करने के लिए किसको यूज किया? I have got the point. And this whole process is called as the process of phagocytosis. इसका plain simple English में क्या meaning होता है? A solid is called as phagocytosis. ठीक है? So, white shirt over there. Yeah, yourself. No, actually पीछे वाली. हाँ. So, what do you mean by? So, if I ask you, what is the function of a macrophage? So, what is the answer you will give, beta? What is the function of a macrophage? क्या आंसर दोगे आप मेरे को? हाँ? To kill the bacteria. Okay. ठीक है बैठिए. Yes, black shirt madam. Phagocytosis. Okay. मतलब सिंपल वर्ड में हम ऐसा बोलते हैं डिफेंस ऑफ द बॉडी. आया ना? अगर कोई पूछता है आपको कि व्हाट डज द मैक्रोफेज डू, तो व्हाट यू विल से? डिफेंस ऑफ द बॉडी. फिर आपको पूछेगा हाउ डज इट डू द डिफेंस ऑफ द बॉडी, तो आप क्या आंसर दोगे? क्लियर एवरीबॉडी? व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ सेल होता है? मास्ट सेल. क्या बोले? मास्ट सेल. फर्स्ट सेल बोलने का आप उसको. This mast cell releases chemicals called heparin, histamine, and serotonin. There is going to these two chemicals first. What are these two chemicals, Bachcho? Heparin and histamine. This one. Who is this? Heparin. Heparin is an anticoagulant. What is heparin? It's an Anticoagulant. Has anybody heard of this word before? Have you heard of coagulation before? Anybody? Yes? Who has heard of it? You have heard of it? Yeah. Tell me, what is coagulation? Blood clotting is called blood coagulation. Say yes, Sakshi. Clotting of blood is called as blood coagulation. So when your blood becomes solid, it is called as coagulation. आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सॉलिड स्टेट में कि लिक्विड स्टेट में? लिक्विड. लेकिन अगर आपको कट गया ब्लड बाहर फ्लो हो गया, किसी टेस्ट ट्यूब में आ गया, तो ब्लड क्या बन जाएगा? सॉलिड. तो बॉडी के अंदर ब्लड सॉलिड स्टेट में होना चाहिए कि लिक्विड स्टेट में? तो ब्लड का कोएगुलेशन होना चाहिए कि एंटी कोएगुलेंट होना चाहिए? तो एंटी कोएगुलेंट का काम कौन करेगा? चलो heparin. Heparin is a anticoagulant. मतलब it will keep the blood in a dashed state. Liquid. Understood? Then, who is the next chemical, Ucho? Histamine. What does histamine do? Histamine is a vasodilator. Okay, and it causes inflammation. Okay, let us understand this. Vaso मतलब blood vessel. Vaso मतलब blood vessel. जैसे उसके ऊपर हिस्टामाइन एक्ट किया, किसके ऊपर हिस्टामाइन ने एक्ट किया बच्चों? ब्लड वेसल.
ये ब्लड वेसल का देखो डायमीटर छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, इसी को बोलते हैं वैसो, मतलब ब्लड वेसल। डायलेशन मतलब डायमीटर बढ़ना। आया समझ में? सो द अमाउंट ऑफ ब्लड रीचिंग अ पर्टिकुलर रीजन will increase or decrease? Increase. And overall उस एरिया में सूजन आएगी, वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ेंगे, डिफेंस प्रोटीन्स बढ़ेगी, एरिया लाल हो जाएगी, वहां पे खुजली हो जाएगी और वहां पे थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। लेकिन ये बॉडी का डिफेंस का तरीका है। बॉडी वहां पे प्रोटीन्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इन सबको ज्यादा भेज रहा है ताकि आपके वहां पे अगर कोई बैक्टीरिया इंजरी हो गया होगा तो उसको मार दिया जाए। समझा मेरा बात? जैसे हम बोलते हैं कि बुखार आना एक्चुअली खराब है कि अच्छा है? अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है बच्चों? क्योंकि बैक्टीरिया को टेम्परेचर 37 चाहिए, तो अपना बॉडी 39 करके उसको क्या कर देगा? मार देगा। बहुत ज्यादा हो गया तो अपने खुद के भी ब्रेन को वो डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो वैसे ही इन्फ्लेमेशन जो है, सूजन आना, वो एक्चुअली अपने बॉडी का डिफेंस है अपने लिए। प्रॉब्लम कब होगा? अगर वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस है डिफेंस के लिए होती है, और उसके लिए कौन सा केमिकल जरूरी है? चलो, द नेम ऑफ द केमिकल इज हिस्टामाइन एंड हु इज अ एंटीकोएगुलेंट? हेपारिन। दोनों के बीच में फर्क समझ में आ गया? चलो, सो व्हाट इज हेपारिन? एंटीकोएगुलेंट। व्हाट इज हिस्टामाइन? इट्स अ vasodilator, मतलब it will dilate the blood vessels, increase the flow of white blood cells, proteins to a particular area. Increase होने की वजह से क्या आएगा? सूजन आएगी। आया ना? ये सूजन आना अच्छा ही बुरा है? अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि वहां पे फिर फाइट होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा जाएंगे। बुरा कब होता है? जब ये ज्यादा टाइम तक रहता है और पेन देता है फिर काफी टाइम। आई होप यू गॉट इट। So what is the function of the mast cells? They secrete heparin and histamine. Is my class following everything? Yes, madam. All of you clear up to here? Yes. What is the third type of cells we have missed over there? No, cell. Who is the cell over here? Adipocyte. क्या कहेंगे उस सेल को? Adipocyte. Now who is this adipocyte? ये कौन है? Cell है। It will store fat. Such fat storing cells are called as adipocytes. And ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये वाला भी न्यूक्लियस सेंटर में कि शिफ्ट हो गया साइड? Because of the presence of a fat particle. Have you got my point? And when the areolar will have a lot of adipocytes, then that areolar will be called as an adipose connective tissue. Have you got my point? When the areolar will have a lot of adipocytes, it will be called as a adipose connective tissue. So slowly areolar can get modified into what? Adipose. Adipose does not have fibers. Okay, there is a difference between adipose connective tissue and areolar connective. But have you followed up to areolar, bachelo? Let's do a quick recap of what we have done up till now. Which tissue did we start in this new lecture, bachelo? Connective tissue. Okay. What is the job of the connective tissue? Other sir? Okay. What is the speciality of the connective tissue? One cell or different type of cells? देखो वही पे मैंने तीन टाइप बता दी। With or without intercellular space? Show the presence of a cementing substance called? The matrix is made up of? And fibers. What are fibers? Proteins. They are present in all tissues or some? They are absent. Most they are present. Fibers are of how many types I mentioned? What are the collagen fibers called? Elastic fibers. Which are the most rigid ones? कुछ भी अपना ही मौसम बना है। Which are the most rigid ones I asked? Collagen. बस अपनी गियर में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर ऐसे चलते हो। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? क्या पूछा था मैंने?
Which is the most immediate? तो क्या आंसर आना चाहिए था? और सब मिलके क्या बोल रहे? रेटिकुलम. अपना माहौल में चल रहे हैं बस. Okay? Which is the most abundant tissue? देखा यही माहौल है. इसको बोलते हैं bias, collagen. मैं बोला which is the most abundant tissue? Connective tissue. उसका आंसर collagen आएगा. This is called. ये भी एक biological concept है. जिसकी वजह से 2-4 MCQs wrong हो जाते तुम्हारे. उसको बोलते हैं cognitive bias. देखो क्या क्या पढ़ाना पड़ता है आपको. क्या बोलते हैं उसको? Cognitive bias. What do you mean by cognitive bias? Can you give me an example of a cognitive bias? चलो. Give me an example of a cognitive bias. हाँ? Example. और कुछ example दे. Give me cognitive example bias case. बैठ जा. अथर्व, give me example of a cognitive bias. नहीं पता. बैठो. Yes, anybody from there? Back benches. What's a cognitive bias? एक फ्लो में आंसर दे दे तो उसी टाइम. See, your brain loves bias because it makes the work of the brain easy. I hope you got my point. I'll give you a few examples of cognitive bias. सब ऐसा नहीं करते, कुछ लोग ऐसा करते, या फिर उल्टा बोलो, बहुत लोग ऐसा करते, कुछ नहीं करते. जैसे अमेरिका में, if there is a black American, healthy, तगड़ा black American with a hoodie and all, you know what is the bias over there? He's a thief. Got my point? Ayana, after 9/11, when I go to say Singapore or other countries, okay, जब मैं इंडिया के बाहर ट्रैवल करता हूँ, तो एयरपोर्ट पे अगर पार्क सर को 10 मिनट लगता है क्लियर होने के लिए, तो मुझे आधा घंटा लगता है. वो फिर हर चीज चेक करते बैठते हैं. समझा? क्योंकि उनके दिमाग में क्या है? कॉग्निटिव बायस. Movin sir does not use a marker, he uses a pen. But they don't know what I'm doing to the society. I hope you got my point. That is called what? Cognitive bias. So while solving MCQs, you read so much, you listen to the teachers so much, and at the time of exams, your brain wants to do things fast or slow. So at that time, it will push you towards which bias? फिर आप पढ़ोगे, फिर एग्जाम के बाद अरे ये तो कुछ और पूछ रहा था. आदर सर, important बात बताया मैंने. What is this called? Cognitive bias. Do you want to fall into cognitive bias? No. अभी you failed twice. हाँ? तू नहीं fall किया था. अपने घेर में चलते. Did you get my point, everybody? So while reading the MCQ in the NEET exam, I have seen toppers scoring 355, losing 5 marks because उसको मालूम था आंसर भी है, लेकिन उसने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं. उसको एक ऑप्शन दिख गया, उसको वो सही लग गया, मार्क नहीं करके निकल गई. फिर बाद में आती है अरे इसका कुछ और था यार. I don't want that regret. So you have to be mentally. Give me the right word. Give me the right word. Concentrated or better word? Alert, attentive while reading the MCQs. ध्यान देने का उसको. समझ में मेरी बात? ये नहीं चाहिए मुझे कभी भी. मार खाएगा तुम लोग अगर क्या करेगा? Cognitive bias. Most abundant collagen. अरे लेकिन क्या है वो देखना. Most abundant tissue है. Most abundant क्या है? Protein है. Most abundant dish in सांगली है. अक्खा मसूर. क्या पूछा वो तो देखना तू भाई. अपना कुछ भी बता रहा है. आया बात समझ में? So tell me which is the most abundant connective tissue. देखो करेक्टिव जो आंसर दिया. क्या क्वेश्चन था मेरा?
Which is the most abundant connective tissue? तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? सर आपने अभी तक बताया ही नहीं। हाँ? एरिया वाला। आया समझ में? मेरा क्वेश्चन क्या था? Which is the most? और ये लोग क्या बोले? Connective tissue. Which one is connective? अभी उनको क्या लगता है? बायस, हम थोड़ी बायस करते हैं ये लोग सब करता है बायस। Externalize to me. Tak. चलो, come on guys, let's do this. What is the job of the connective tissue? It helps to bind and support. Very good boy. And connective tissues are classified into how many types? 3 types. What are the 3 types? Loose, dense, specialized. What is the difference between loose and dense? Loose have more. बोला सर बेटा, बोला सर. Dense has बराबर है. And specialized has बताया नहीं सर अभी तक आपने कुछ. आपने सिर्फ इतना ही बोला कि उसमें कार्टिलेज आता है, बोन्स आता है और ब्लड आता है. ब्लड में फाइबर्स एब्सेंट होती है. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में तीनों टाइप के फाइबर्स है, अबंडेंट मैट्रिक्स है और 3 टाइप्स की क्या बताया मैंने? सेल्स. कौन से? मैक्रोफेज, मास्ट सेल, एडिपोसाइट. मैक्रोफेज का नाम फंक्शन क्या है? मतलब फैगोसाइट फंक्शन. ईट द सॉइल. कैसे करता है ईट? वो पहले करेगा एंटर, फिर ईट, फिर ब्रेक डाउन. Correct, Bachelo? So it will help to give you what? Defense. Then you have what? Mast cell. Mast cell releases how many chemicals? 3. Which is a vasodilator in that? Histamine causes inflammation. Suzanne बोलते हैं ना उसको inflammation को. Then you have what? Heparin. What is the job of heparin? What do you mean by anticoagulant? It will keep the blood in a liquid state. And adipocytes store dash fats. When a connective tissue has a lot of adipocytes, it's called as which tissue? Adipose connective tissue. Okay. What is the job of the adipose connective tissue, Macho? Yes. Insulation. Insulation. What do you mean by insulation? What do you mean by insulation? चल अथर्व बता. बोल. Sir, insulation means providing heat. Providing heat के preventing the loss of heat. Preventing the loss. Good, sir. Understood? What do you mean by insulation? Preventing the loss of heat. It's called what? Insulation. Which animals will require more insulation? Polar bears. Polar bears. Or the ones who live in Antarctica also. कैसे रहते हैं? दुबले पतले रहते हैं? चिपटे गट्टे रहते हैं? मेरे जैसे रहते हैं? किसके जैसे रहते हैं? तो तुम्हें को मोटा बोली ना? Because they require insulation from heat. Right, बच्चों? Then, any other function of adipose tissue? Fats का कोई use बताएगा आपको? Food storage? Okay. What do you mean is they help in energy reserve. क्या बोलना चाहते हो आप? Energy reserve. Okay. Use as a source of energy. Then बच्चों? Yes. बोलो. Shock absorber. Okay. So it will protect your important organs like kidneys and all. It's a protection of vital मतलब important organs. Okay, visceral vital. Okay, life के लिए important organs. They are covered by what? Adipose. दूसरे भी फैट्स के फंक्शन है बच्चों. जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन्स यूज करने में हेल्प करता है. उसके बाद ना आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स है, जैसे फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन. ये सब किससे बनते हैं? फैट्स से बनते हैं.
I hope you got my point. Huh? Fats say, to the tongue I am tasteful, in limits I am beautiful, in excess I am dangerous. ये फैट्स का रूल है. क्या फैट्स का रूल? कि जबान में मैं टेस्टी हूँ, तो ये नहीं. लिमिट में मैं सब काम करूंगा, एक्सेस में मैं क्या हूँ? डेंजरस. ओके, सो एडिपोज टिश्यू सही क्वांटिटी में वेरी गुड, एक्सेस में डेंजरस, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर. जितना ज्यादा एडिपोज टिश्यू होगा उतना उसको ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा. सो दैट इज द ओबीस पीपल आर हाइपरटेंसिव, दे हैव हाई ब्लड प्रेशर. What did everybody? बचपन में अपने पास एक स्पेशल एडिपोज टिश्यू था, इन्फेंसी में. ये सब बायोलॉजिकल वर्ड ध्यान में रखें. हाँ, क्या लिखा मैंने? इन्फेंसी. इन्फेंसी मतलब नवजात शिशु. You have a special type of adipose tissue called BAT. क्या होता है उसको? Brown adipose tissue. क्या होता है उसको? Brown adipose tissue. It can 1 gram of BAT can give 50 times more energy than normal adipose tissue. So you are छोटा साइज बड़ा धमाका. इतने छोटे साइज के होते हो. और फैट्स कौन से टाइप के होते हैं? ब्राउन. सो भली आपको तुरंत अगर मिल्क वगैरह नहीं मिला तो भी वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू से बहुत सारा क्या मिलेगा आपको? एनर्जी मिलेगी. लेकिन जैसे आप ग्रो होते हो, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू as you become adults it is replaced by VAT, that is white adipose tissue. So VAT is what bachlo? Brown adipose tissue, and VAT is what? White adipose tissue. Is the board clear bachlo? Yes. Pakka? Okay. Loose connective tissues, they have more number of dash, less number of dash. बराबर है. Areolar tissue. Areolar tissue has 3 types of cells. What are the 3 types of cells? Mast cells. Mast cells secrete 3 chemicals. What are they? Serotonin. Who is the vasodilator? Histamine. Who does phagocytosis? Who does phagocytosis? Macrophages. Who is an anticoagulant? Who is the most abundant protein in animal body? Collagen. झगड़ा. अलग लक्षात सर्वांना. ऍडिपोज टिश्यू किती प्रकार असतात? ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू किती प्रकार आहेत? 2. इन्फेंसी, नवजात शिशु के टाइम पे बैट, ब्राउन. वैट वाइट. ब्राउन क्यों होता है वो टाइम पे? क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी देता है. ओके, एडिपोसाइट की स्पेशलिटी क्या है? इट कैन स्टोर फैट्स. ठीक है, ask your questions now before you start writing quickly. Now, so we have covered the which type first? Loose type. Now we have to talk about which type of slope? Dense. Dense connective tissues. Right everyone? Sir, आप डिफरेंस बताएंगे लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बीच में? There are more number of cells and less fibers. And less, there are more number of fibers and less fibers. Correct. That is called as dense connective tissue. In a dense connective tissue, guys, look at these types. Okay, those lines, they represent, what do they represent, Vishnu?
fibers, or I have mentioned what? Collagen fibers. Right? And do you see that the orientation of the collagen fibers is different? What is different? Orientation of fibers. I'm going to ask you a question now. Okay? Who will answer? Yes? Yes, beta. What is the difference in the orientation of fibers in the two? So their structure, they are in group and they are separated. मतलब और थोड़ा better way में describe करेगा? They are branched and they are No, they're not branched. हाँ? बोल. सबको मौका मिलेगा, टेंशन नहीं. लेफ्ट साइड में सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और राइट साइड में स्पार्सली है. Okay, better, good. पीछे last bench, yes. Those are collagen fiber, hence they are rigid. These are loosely packed, so they might not be. इसी का मतलब करते हैं. हाँ. देखो दोनों भी कोलाजन फाइबर्स है. उसने सही पॉइंट बोला कि यहाँ पे क्या बोला अरेंजमेंट कैसा है? सिस्टमैटिक. कैसा सिस्टमैटिक है? कैसे दे आर पैरेलली अरेंज्ड एंड हियर कैन आई से दे आर रैंडमली अरेंज्ड. दैट इज द डिफरेंस. एंड दिस वाज द PYQ question. Okay, it was a previous year question. Okay, and what was the PYQ? The answer was that this is the connective tissue which is called as dense regular connective tissue, and this connective tissue is called as a dense irregular connective tissue. And what is the difference? Orientation of fibers is parallel in dense regular connective tissue, and it is randomly arranged in dense irregular connective tissue. आपको फुल फॉर्म में लिखना है कुछ लोग, शॉर्ट फॉर्म याद नहीं रहेगा, हाँ? इसलिए नोट्स बनाते फुल फॉर्म में लिखेगा कि the orientation of fibers is all collagen fibers are parallel arranged. That is why it is called dense regular, and here it is called what? Dense irregular. Got my point? Now kids, dense regular consists of different types. They are dense regular, white fibrous, dense regular, yellow elastic. Dense regular white fibrous will have the sheets and the tendons, and the yellow elastic will have the sheets and the ligaments, and we'll focus on these and we'll learn only these. So dense regular will have tendons and ligaments. Now what are these tendons, Bachalo? This is a bone and this is a muscle. Okay? The muscles are attached to the bones, and those are called as tendons. Okay? Similarly, kids, this is another bone. दूसरा हड्डी है. When two bones come together, they form a joint. When two cells come together, they form a junction. When two bones come together, they form a joint. Now here, the two bones are held together. It prevents the bone from dislocation, separation. And this tissue is called as a ligament. Tendon will have more amount of collagen. That is why tendons are more tough. Ligaments will have more amount of yellow fibers. So ligaments will be slightly flexible. Got my point, everybody? Yes. Yes or no? Yes. Okay. So you got the difference between dense and regular and irregular, bacha? Dense regular में tendons and ligaments. Tendons connect muscle to the bone, and ligaments connect bone to the bone. Okay, and the dense irregular ones, they are found in the
layer called dermis of the skin. Your skin has got two layers. The outermost layer is called epidermis, and below that the layer is called dermis. And the dermis shows the presence of which layer, Bachalo? Dense irregular. Okay? So this was all about which one? Loose and dense connective tissue. Okay? So if you want to quickly recap of what we have done today. Today we began with which tissue? Bias. No, we did not begin with connective tissue. We started with epithelium. I started with compound epithelium. Compound epithelium, single layer or multi layer? No writing कुछ नहीं. Pay attention. Multi layers. बराबर है? The bottom layer, cell division, followed by middle layer and the top layer. Top layer can be of different types. Compound epithelium is specially meant to protect from. Yes. It is present in dry area of the skin and the pharynx. Barabar? Also, ducts of the salivary glands and pancreatic ducts. When the two epithelial cells come together, it is called as a cell. Cell junctions are of different types. Which junction helps in rapid exchange of material between the two cells? Which junction will help the two cells to be held together? Held together. Held together. Cementing. You see gap. Which will prevent leakage? Tight और इसमें फर्क बता रहा. Tight will help to prevent leakage. और छोड़ के रखने में कौन काम होता है याद है? Correct. Which is the most abundant tissue in the body? What is the speciality of the connective tissue? Matrix, cells, fibers. What are three types of fibers? White, yellow, and reticular. Which connective tissue lacks fibers? Blood. Correct? And in the blood, the matrix is in the form of dash. Plasma. Very good. Then I told you the difference between loose and dense connective tissue. Loose where we spoke about areolar and adipose. What is the specialty of adipose? It has got fat droplets. In infants, there is brown. In adults, there is white. Correct, kids? Yes. Dense regular. Sorry. फिर एरियोलर में मैंने तीन टाइप के सेल्स भी बताया था आपको. क्या नाम है उनका? तीन अलग अलग काम ना उनके. सूजन किसके साथ है? हिस्टामाइन. ब्लड का लिक्विड कौन रखता है? हेपाइन. करेक्ट. देन डेंस में हम लोगों ने दो टाइप्स किए. डेंस रेगुलर डेंस. इसमें कोलेजन का अरेंजमेंट रैंडम होता है बच्चों. डेंस कौन बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करता है and कौन मसल टू द बोन कनेक्ट करता है. Do you know the name of any tendons in your body, kids? Achilles tendon. Achilles. Here. ये जो है ना पीछे वाला टो वाला इधर ना ये रोप जैसा दिखता है देखो. You can touch है ना तुम्हारे पास पीछे एंकल के पीछे देखो. Touch your own ankle. Similarly ये नी के पीछे देखो दो ऐसे बड़े बड़े रोप दिखेंगे. हैमस्ट्रिंग बोलते हैं. यूजुअली क्रिकेट बॉलर्स को उसका इंजरी ज्यादा होता है. हैमस्ट्रिंग टेंडन को. ठीक है? ओके, कॉपी दिस डाउन. Sir, now, बोल. अगर जब bones dislocate